Yeah, we'll be starting in a few minutes. Just wait. Actually, a lot of people are still joining, so we are just waiting for a while. And we'll be making a resume website. So actually, you can ask your friends to join, and you can make the cool website like to display your projects, maybe, or your profile in general. So it might help you guys after all. So you can ask your friends to join as well. Is my screen visible? एक बार chat box में बता दो मेरे को. हाँ दिख रही है. Okay, great. So, all right, we are starting now. Fine. So,
First of all, I would like to welcome you all to IEEE TechWeek 2022. And this is the web development SIG that will be conducted even in the SIG part of IEEE that will be explained to you in much detail later on. So today we'll be focusing on two web technologies. One of them is HTML and the other one is CSS. Quite trivial for those who already know about web technology. मगर आज इसी के बारे में बात करेंगे. We can even create great things using these two technologies. ठीक है? And I think you all must be knowing about IEEE. Like इतना तो पता चल ही गया होगा. So let's move forward and first of all meet the team. So there's me, Anchanurag, second year COE undergrad. Along with me, I have Saujanya Sood. She is great at front ends, especially designing beautiful web designs and websites. So Saujanya Sood is there, second year IT. And then we have Abhinav Agarwal from electrical engineering. He's a great full stack developer. So he does both front end and back end. All right. So let's move forward. सबसे पहला क्वेश्चन सबके मन में आता है कि वाई वेब डेवलपमेंट, ये करना ही क्यों है बेसिकली. तो पहला रीजन यही है कि इट इज द आइडियल टेक्नोलॉजी टू मेक यूनिक प्रोजेक्ट्स दैट गो ऑन योर रिज्यूमे. बेसिकली जब तुम अपना प्रोजेक्ट किसी को दिखाना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि उसे एकदम से दिखा सकूं. तो यू कैन लिटरली हाइपर लिंक द वेबसाइट लिंक जो अगर तुमने डिजाइन करी है तो उसको तुम लिंक कर दो एंड इट मेक्स द रेज्यूमे मोर interactive and attractive at the same time and increases your value overall if you know web development. Okay, other than this, most organizations need websites. We are living in the world of technologies, guys. So हर किसी को एक वेबसाइट चाहिए, हर किसी को अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छी तरीके से दुनिया के सामने लाना है. तो everybody is requiring a website right now. तो आप लोगों को अगर आप वेब डेवलपमेंट जानते हो तो यू कैन बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी एंड यू कैन कंट्रीब्यूट टू such websites and maybe earn money and gain experience and stuff. And the third and the most important thing is that it's very easy to learn. Like you can make projects while you are learning and implementing things. All right, there are a few more reasons, like a lot of interesting and easily accessible libraries are there that make your work easier. Like abhi to hum log libraries वगैरह में नहीं घुसेंगे, but in the future SIGs we'll get to know about libraries such as React. There is React in JavaScript that makes the work easy. We have Angular, Vue, Next. ऐसे काफी सारे libraries है that make your work easier. Your code looks more consolidated and structured. All right. And other than this, there is a great variety of resources there to learn web development. क्योंकि दुनिया में काफी सारे वेब डेवलपर्स हैं at the time. So it is a big community. There are people fighting over कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, ये टेक्नोलॉजी अच्छी है. But if you go to that community, you ask your doubts, then those who know will always come up to help you. Like you can join Discord servers and all. So there will be people who will be willing to help you for sure. So अब बात कर लेते हैं कि इतना भारी भरकम वर्ड बोल तो दिया है कि वेब डेवलपमेंट कुछ होता है, बट ये वेब डेवलपमेंट होता क्या है आखिर में. तो वेब डेवलपमेंट को ना आसानी से समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है फ्रंट एंड, जिसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड, जो हमें दिख रहा है. अभी अगर आपको एक वेबसाइट है, जैसे अभी गूगल मीट की भी आप स्क्रीन देख रहे हो, तो ये गूगल मीट का फ्रंट एंड है. ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि इतने सारे लोग आए हैं मीट में, एक स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग अटेंड कर रहे हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मल्टीपल ऑपरेशंस दिए हैं आप लोगों को करने के लिए. दिस इज द फ्रंट एंड. सो आप इससे इंटरैक्ट कर रहे हो बेसिकली. ऑलराइट, तो अभी आपको जो भी दिख रहा है ना, इट इज मेड यूजिंग थ्री थिंग्स: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ये तीनों लैंग्वेजेस हैं जिसमें HTML और CSS के बारे में अभी हम लोग और डिटेल में जानेंगे. जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो भी लॉजिक्स यूज हुए हैं ना वेबसाइट में कि इसे क्लिक करने से ऐसे कर दो, तो वो चीजें जावास्क्रिप्ट से बनती है. इट इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इसको यूज करके तुम अपनी वेबसाइट को प्रोग्राम कर सकते हो कि ये फलाना हमने बटन दबाया तो इससे ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. दैट इज प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट. एंड दूसरी साइड होती है जो आप लोगों को अभी इस वेबसाइट में नहीं दिख रही होगी, दैट इज द बैकएंड. बैकएंड क्या होता है, सिंपल भाषा में बताऊं तो
backend is the server side. Like front end was the client side, now backend is the server side. कि जैसे हम एक रेस्टोरेंट में है, यहाँ सामने दिख रहा है आपको कि एक फ्रंट एंड है, वो आपका रेस्टोरेंट है, एंड रेस्टोरेंट का किचन आपका बैक एंड है जहां पे खाना बन रहा है. सो देयर शुड बी सम टेक्नोलॉजी दैट इज सपोर्टिंग अस. लाइक मैं तो अपनी जगह पे बैठा हुआ हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, एंड स्टिल आप लोगों को मेरी वीडियो दिख रही है, तो देयर मस्ट बी सम मिडल मैन इन द प्रोसेस जो मेरी वीडियो को आप तक पहुंचा रहा है. सो दैट थिंग इज द बैक एंड. या फिर अगर हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रही है कहीं पर, तो वो रिकॉर्डिंग जहां जा रही है वो बैक एंड है. ठीक है, दैट इज द सर्वर दैट इज होस्टिंग अस, जो हमें इस मीटिंग को होस्ट करने दे रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, सो दैट यू कैन सी इट. दैट पार्ट इज कॉल्ड बैकएंड. सो बैकएंड के लिए भी कई लैंग्वेजेस यूज होती हैं. अ लॉट ऑफ देम यू मस्ट बी नोइंग. लाइक पाइथन का नाम सुना होगा, पाइथन इज देयर. यू हैव PHP, यू हैव JavaScript only as well in the Node.js environment. इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ द SIGs. अभी के लिए हम लोग सिर्फ सबसे पहली और सबसे ट्रिवियल टेक्नोलॉजीज पे फोकस करेंगे, दैट इज HTML एंड CSS. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. सो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ वेब डिजाइन. जब हम वेब डिजाइन कर रहे हैं, मतलब कि एक वेब पेज को लुक्स दे रहे हैं, एक एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, बेसिक सी कि जो एक ही जगह पे हो सकती है, जैसे कि ये बटन दबाना है, इससे ये कलर चेंज हो जाए, लाइक ऐसी चीजों के लिए हम लोग ये 3 टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं. पहली है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं इसे, एंड इट इज यूज्ड टू गिव द लेआउट टू द वेब पेज. सो बेसिकली वेब पेज कैसा दिखना चाहिए स्ट्रक्चरली, दैट इज गिवन बाय HTML. सो HTML बेसिकली वेब पेज का स्केलेटन है. इफ वेब पेज वाज अ ह्यूमन बॉडी, यू कैन थिंक ऑफ HTML एज इट्स स्केलेटन. कि वो वेब पेज कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा, कि यहाँ पे 4 बटन होंगे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस. उसके नीचे एक और बटन होगा जिसपे सबमिट का होगा लेट से, या फिर कुछ हेडिंग होगी, उसके नीचे एक पैराग्राफ में टेक्स्ट होगा. ये सब हम HTML में डिफाइन करते हैं. अदर देन दिस वी हैव CSS. CSS इज यूज्ड टू गिव स्टाइल्स टू द वेब पेज. लाइक अगर ह्यूमन बॉडी वाली एनालॉजी से चलते हैं, तो HTML was a skeleton, CSS was the skin and the face, like what you can see. So CSS के बारे में भी और डिटेल में बात करेंगे हम लोग अभी. एंड द थर्ड थिंग इज JavaScript. सो अगर ऐसे ही शरीर पड़ा हुआ है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो तब क्या हो सकता है उसमें? सो उसमें ऑर्गन्स चाहिए तुम्हें उसको काम करवाने के लिए. सो दोज ऑर्गन्स आर JavaScript. JavaScript actually makes the web page work and have functionality. ऑलराइट, जावास्क्रिप्ट से आजकल पूरा फ्रंट एंड भी डिजाइन हो रहा है, बट दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. बट अभी के लिए हम लोग HTML और CSS ही यूज करेंगे. ऑलराइट, अभी भाई आया है, सबकी फुल फॉर्म बताएगा, डोंट वरी. ऑलराइट, सो वी हैव HTML. सो सौजन्या विल बी टेकिंग ओवर फ्रॉम हियर. सौजन्या, हेलो, आर यू देयर? Yes, Ansh, I'll be presenting my screen. ऑलराइट, great. Just a second. Can somebody tell me if my screen is visible? Yeah, it's visible. Okay. All right. Hi guys, how are you? So we're going to start with HTML now. So HTML, as Ansh very precisely told, is the skeleton of a web page, right? So whatever you see, so here we have a little description. So it's a markup language used to create the content and the structure of web pages. So here I have a little screenshot of Instagram for you. Everything that you see here, from this logo of Instagram to these this entire form that asks you for your information, all of these links, all of these Play Store, Google Play, all of these links, all of this is HTML. The base of this, the entire skeleton, it's entirely HTML. Whatever styles are applied on that is CSS, but the very presence of these elements, that's all HTML. So first we're going to learn about HTML a little bit. Let's come to HTML tags. Now, all HTML documents will begin with HTML, the HTML tag, right? And every tag in HTML looks exactly like this. There are a few exceptions. We're going to learn about them as we go. But most tags look like this. They have an opening tag,
and they have a closing tag. And the closing tag has a forward slash before it. And between these two tags, we have all the content that we want to go in there. All right. So what is an HTML element now? An HTML element, as we saw here, as I told earlier, all of these are HTML elements. So all of this content that goes between these two tags, between the opening tag and the closing tag, all of this content, that's what's called the HTML element. So for example, this is a heading. So we have a heading tag and we have a paragraph tag. And both of these entirely form a single element of a web page. So that's what an element is. Now let's look at the basic structure of an HTML document. And I have a screenshot attached here for you. Now this is basically some boilerplate code. Boilerplate code means you have to write all of this every time you start an HTML document. All right. So you can easily find this on the internet, but it's always nice to know what exactly all of this means. So the first tag we have here is doc type HTML, and HTML5, which is the current version of HTML that most people use, requires you to specify the document type right before you start the document. So you specify that the document type or the doc type is HTML. Then we have some basic tags here. All HTML documents will begin with an HTML tag and they will end with an HTML tag. So you specify some attributes. All of these things that come between these brackets, other than the tag itself, they're called the attributes of the tag. So here you specify that the language you want is English, EN is for English, and the direction of the text you want is left to right, LTR. Right. Then you begin with the head tag. The composition of an HTML document is basically between the HTML tags, there's the head tag and the body tag. So the head tag contains all information that's required by the browser. None of this is important to the user, but it's still very important to specify because the browser needs it. So you have the meta tag. The meta tag is basically used to give some information to the browser, and you specify there that the cassette that you want to use is UTF-8. Now we don't need to go into the details of this, but I'm pretty sure that most of you know what an ASCII cassette is, right? It has a whole bunch of letters and symbols, all of these characters. That's what's called ASCII. So similar to ASCII, there's also a UTF-8. So you just write this sentence to make sure that there is no possible character that you could use on in your entire program that is not identified by the browser, because UTF-8 contains everything that you could possibly think of, all characters, all symbols, everything. Then you have the title of the web page. So what is the title of the web page? So for example, you see in this tab here, this title here, right? The title that appears on the tag. So this is what is called the title of a particular web page. And this is what you're supposed to specify inside these two title tags. I want you to very carefully notice that all of these have an opening tag, title, and a closing tag. The meta tag does not. Some tags don't need a closing tag, but title needs a closing tag because we're specifying some content inside it. Then we close the head tag and we start with the body tag. Now the body tag is where everything starts to get very interesting, because this is the content of the web page. This is everything you see on the web page. This is your entire design of the web page. So yeah, that's the basic boilerplate code of the of any HTML document. So you'll need to write this every single time you start. Now we'll come to some important HTML tags, and I have a little web page that we're going to create while I'm explaining these tags to you. And all right, here it is. So right now it's a blank web page because there is essentially nothing on it. And here's the code for it. So you can see the basic boilerplate code right here. This is exactly what I told you about. And between the title tags, we have the title of the web page, which is the demo. Okay, so the first tags we have here are the heading tags, right? So let's see what the heading tags look like. Now there are 6 heading tags, the largest one being H1. So if I want to write this heading, hey, welcome to Tech Week, in as a heading, which means I want it to be bigger and bolder, I'm going to write it inside H1 tags.
Let's see what this looks like. Every time you want to see the result of your web page after you make any changes, you're going to have to refresh the page. So I'm going to refresh it every time. So you have this entire heading that it's bold, it's big, and it sort of makes a statement. This is what you'd want as a heading to any paragraph that you write. Now let's see what the other heading tags do. So as I uncomment two more of those, I see this is H2 and this is H3. Now, as the number increases from H1 to H2 to H3, you see that the size decreases, right? And that is exactly what's going to happen as we go lower. So, right. So this is from H1 to H6. And these are all the tags that HTML provides to you for the purpose of a heading. All right. Now, a heading is all right, but what about a paragraph? Because there's just, I mean, no web page is just consisted of headings, right? So you need some paragraphs, some content that you want to put in there. So for that, we have the paragraph tag or the P tag. And again, you see here that there's an opening tag and a closing tag, and there's all of this content in between. So this is the content that will appear as your paragraph. So you see here, this has no fancy styling applied. This is just normal text, like, I don't know, some paragraph in a book. So that's exactly how it's supposed to appear. Now, we have a little problem. No web page really looks good with all text, all stupid, boring text. We need images. We need a lot of images. And for that, HTML provides you this tag called the IMG tag or the image tag. And again, you notice that there is no closing tag, right? So you don't really need to write this. You don't have to. Why is that now? Now that's because you're not actually adding any content between those two image tags. You don't have to. You can just specify what image you want to go in there. So for example, here I want techweek.jpeg, which is an image that I have stored here. I want this image to go on my web page. So for that, I'm going to specify the src or the source. Again, this is an attribute of the img tag. So you need to specify the source, which is techweek.jpeg. And if you do that correctly, you'll have an entire image on your web page, which of course brightens up things a lot. Now, one thing here is, what is the alt tag? The alt tag. So, okay, so on a lot of websites, you see that for some reason, if you can't load an image, there is this really ugly icon that appears, and then there's some text that appears against it. I'll show you how that looks like in case you have a problem recalling it. So I'm on purpose going to mess up the path of this image so that I can't see it, because there is nothing called techb.jpeg in my folder. So it's just not going to be able to sense it. So you see this very ugly icon and you see this text written against it. Now, how did the browser know that it was a TechWeek image? That's a little fishy. Now it knew because I specified in the alt tag that I want this text to appear as an alternate text in case something goes wrong and my image is not visible. So this is basically to tell the users that if you can't see the image, this was the image that was intended to be shown here. So that's what you specify in the alt tag. After that, after we've seen those three very basic tags, we have this tag called the link tag or the anchor tag. So on most web pages, you see that it's not just a plain web page. There are a whole bunch of links. So for example, on Instagram, when you pull up somebody's story, say, on the top, you can click on the person's user ID and you can go to their you can go to their ID, right? And you can check out their profile. Now, how do you do that? You do that using the anchor tag. The anchor tag or the A tag uh, lets you it lets you go to a different web page from the one that you're currently on. And how do you specify that particular particular web page that you want to go to? So you specify that inside href. Href is an attribute of the anchor tag that lets you specify a web page that you want to go to. So this entire
URL is the web page that I want to be able to link to from my current web page. And so if I refresh, you'll see that I can access my website at this link. So when I click this link, it takes me to the TechWeek website, which is great. All right. Now let's talk about the div tag. All right. What is the div tag now? So, okay, so on most websites you see, I'm just going to pull up an example and show you. So on most websites, like on this one, you see that we have this entire navigation bar that can take you to different parts of the website. I have this, I don't know, like this sort of intro. I have this image. I have all of this about section. Then I have these events. And finally, I have a footer, uh, which is again divided into different sections. So how did somebody create all of these different sections? And how did they affect the styles of them altogether? Now that's done with the help of the division tag or the div tag. So the div tag lets you group your web page into different sections or different divisions, literally, and it lets you group elements together. So, for example, here I'm grouping this p tag, this paragraph, and this heading together, and I'm putting it inside a div or a division. So now, when I want to change the styles of this entire division, I won't have to go to all of these elements and change them separately. I can just do that to this div, and I can change the corresponding properties of this group of elements. So now this doesn't look any different when you look at it. So like you still see that there's just a paragraph and a heading. So I mean, that's the difference. Why couldn't we just write it like that? We're going to see more about that when Ansh explains more to you about CSS, because then you'll be able to see how divs affect styling, right? Now let's come to another very interesting element. It's called the unordered list. So a lot of times on a web page, you might need to specify a list of things, right? So, for example, you want to make a web page where you want to note down all your notes, say, but you note things down in points. So, how do you do that if you just have a paragraph tag available? You do that using a list. So, a list, here I have an unordered list. We're going to see the difference between an unordered and an ordered list in a bit. But you basically make an unordered list and you write all of these list items. So LI stands for list items. And between these list item tags, which again I want you to notice, opening tag, closing tag, it gets a little repetitive, but it's really important. So between these tags, you're going to specify all of the things that you want to go on as the list items. So for example, if you were making notes, between these two tags, you'd have your entire note content, right? So here I have a good old H1 tag that we learned about right at the top. And here we have all of these list items. So let's save this and refresh the page and see what happens. Right, so the H1 tag, and then we have this list. Now we have all of these bullets. These bullets specify each list item, right? Um, okay, so now let's see what happens if I change this to an ordered list. Again, the short form is pretty self-explanatory. It's OL and UL. So if I do OL, it now comes as numbers because now the list has an order. It goes from 1 to 6. Now you can definitely change this. You can make it A to F, or you can also change it to Roman numerals. But for now, I'm just going to go with normal numbers. And also, we're going to keep it unordered. So with unordered lists, you can't see any sort of a sequence. Now, finally, there's one more thing, one more very basic element, which is quite an essential part of many web pages. It's called the form. So I'm just going to go back to the presentation. If you go to this slide, you see this Instagram screenshot, right? You see that it asks you for your phone number
and your password, and then it asks you to log in. So uh, what are we using to take all of this information in? From the user. We're taking information from the user. But until now, all the tags that we know about were all us displaying information to the user and not taking it from them. So if you want to take information from the user, you're going to use the form tag, and you're going to create a form inside your HTML document. All right. So if I refresh that, you see here, uh, you can actually enter things inside this, and you can also click this checkbox, and then you can also press this button, which essentially just refreshes the page. But let's see how we created all of these. So these boxes you see right here, the ones where you can enter your name or enter any text that you want, these are called input boxes. So here you have an input tag right here. So you have a tag. Again, this does not have a closing tag. So yeah, quite a few of HTML tags don't really have a closing tag. But again, don't worry about it. You don't have to memorize this in any way. You have all the information available on the internet. Um, all right. So the type of input that I want to collect from the user here is text. The name of this tag, the name of this element is f name for first name, and the placeholder. Now, what's a placeholder? I've written here the placeholder as enter first name. Now, where does enter first name really appear? Let's see. It appears here, the gray text that you see. So this is to tell the user what they have to enter. Of course, this text, but until the user enters something, you need something that holds the place of the input, and that's called the placeholder. So you specify a placeholder that says enter first name. Then you have an other input tag that says that also has the type text. It has the name L name, and the placeholder here is enter last name. So here, if I see, I have enter last name written until I enter something. And then there is one other input right here. I just added this to show you that text is not the only kind of input you can take. There's a whole bunch of other types as well. So the type here is checkbox. Now what that means is that you get a checkbox. Very simple. You don't have to do some fancy coding on your web page to be able to do something that has functionality as basic as a checkbox. HTML gives it to you. Now I'm just going to change one of these types to show you that text is not the only type. Right. So now I changed the last name's type to number. Right. This is L name and this is number. So now I can't type any text into it. There is no text I can type. I mean, I can type an E because it takes numbers and E is used for exponent, but I can only type numbers here for the most part. No text really goes in here. So that's the number type. And there's also something called password. Right, I'm gonna refresh it. Everything I type in here comes as a password. Nobody can see what you're typing. And this is what all of these fancy websites, Instagram, Facebook, any login related website really that asks you for a password is going to be using this to make sure that your password is not visible. Now, I think one last thing we have here is the labels that I have for these input tags. So I have this label for, right? I have this label for an element that has the name f name, and f name is this element, the input element. So that's f name. And between these two label tags, the opening tag and the closing tag, I've specified the label for that particular input element. So here I have first name. So the label is essentially the text appearing here. Then for L name, I have this label called last name. And yeah, and that is what appears here. And then the label for this checkbox, which I named remember,
is remember me, and remember me is what happens here. Now, all of this is all right, but I'm gonna need something to submit this information to my site, right? Now, that's done using a button. A button. So, for example, here you see on this Instagram screenshot that there's the phone number, the password, and then there's a login button that makes sure that your information is submitted. So, this is right. So the button is what is used to submit that information inside the form. And here the button type that I've used is submit. The uh, content inside the button is login. So you're going to see that inside this I have login written. And right now, so initially when you set the type of your button to submit, it does whatever the action of the form is. The action of the form here is index.html, and what that means is that on clicking on this button, it is going to take you to the to whatever is specified inside action. So here I have index.html specified in the action, which is why it's going to take me there, which is exactly why it just reloads the page. Right. And yeah, I guess with that, we are done with all of the very basic tags that I wanted to tell you guys about. Um, So there's a few more basic tags. There's a table tag, a table, and inside that we have table row, table cell. I want you guys to experiment on your own with all of these. They're very simple tags, so you can experiment with all of these. Right. And now the problem we have here is, now you know a lot about all of these HTML tags by now, and these are very basic tags. So just with the help of these, you can create a web page that is decently functional, right? You can like make a decent thing that has some content, some pictures and everything. The only problem is that the web page you're going to make is probably going to be very, very ugly, and you need to add styles to it to be able to make it look pretty. So Ansh here is going to tell you what CSS is, how it's used, and how you can make very, very pretty web pages using just HTML and CSS. Ansh? Yeah. Uh, all right. Let me just share my screen. All right, guys. HTML समझ आ गया होगा आप लोगों को कि how you can structure things. All right. So अब हम लोग CSS के बारे में बात करते हैं. CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट. कोई शुरुआत में पूछ भी रहा था. So it is cascading style sheet. यहाँ पर एक मीम भी है दिखाने के लिए कि how HTML is all ugly and boring and how suddenly you add CSS then it becomes Red Woman. All right. So it is basically used for styling different HTML elements. अगर आसान भाषा में बताऊं तो ये उसकी सूरत को निखार देता है एकदम. और CSS जो थी वो it was introduced in HTML4 and it was a better way to style elements. उससे पहले हम लोग individual elements को okay, all right, form is not opening, all right, we'll check that, all right, don't worry. So ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीका है कि हम लोग एलिमेंट्स को स्टाइल कर सके. ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड. अब देखो ये स्टाइल शीट्स जो है, ये स्टाइलिंग जो है, ये दो तरीके की होती है. सबसे पहले कि एक तो जो ऑलरेडी होकर आई है, दैट इज द ब्राउजर स्टाइल शीट, जो डिफॉल्ट होती है, दैट इज ब्राउजर स्टाइल शीट. अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे देन इट विल यूज द ब्राउजर स्टाइल शीट, which is basically whatever HTML is without CSS. Alright. और दूसरा है author style sheet. It is when you create the styling of a particular element, then it is called author style sheet. तो हम लोग पहले पुराने तरीके भी देखेंगे और नया तरीका जो आया था एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाला वो भी देखेंगे. सो देयर आर 3 ways: इंटरनल स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट. ऑलराइट. And guys, end तक साथ में रहना. We'll be having a great project with Abhinav sir. He'll be making a portfolio website and you can code along with him. He'll be showing you how to code along as well.
And other than this, we'll be having a Kahoot quiz as well, and we have a lot of giveaways and prizes for that as well. All right, so adding CSS to HTML, तीन तरीके हैं, अभी मैंने नाम लिए तीनों के. एक था इनलाइन, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल. इनलाइन जो है उसमें हम लोग एक स्टाइल एट्रीब्यूट जो है, जो भी स्टाइलिंग करनी है, जैसे अगर उसका कलर चेंज करना है तो हम लोग उसको उस एलिमेंट के साथ ही मेंशन कर देते हैं. जैसे अभी हम लोग इमेज में ऑल्ट यूज कर रहे थे ना, कि इमेज टैग में एक ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल रहे थे, वैसे ही अभी हम लोग एक स्टाइल टैग यूज कर लेंगे. ठीक है. फिर एक होता है इंटरनल. इंटरनल में यू डिफाइन स्टाइल इन द हेड. अभी हमने देखा था दो पार्ट थे HTML में, एक हेड था एक बॉडी था. तो अब हम लोग अगर स्टाइल को डिफाइन कर देंगे तो वो हम लोग ऐसे करेंगे, तो उसे कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग. वो भी मैं दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी. एंड द थर्ड वे इज यूजिंग एन एक्सटर्नल CSS फाइल. वो भी मैं दिखाऊंगा, इसके बारे में भी तभी बात करते हैं हम लोग डिटेल में. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. So inline styles can be used if a unique element is to be applied, style is to be applied to a unique element. एक element को जब style करना है तब हम लोग inline styles use करते हैं. And जो inline style attributes हैं उसके लिए एक style attribute use करना होता है tag में, and it can contain any CSS property. Guys, the attendance form is there in the chat box. You can go and mark your attendance. It is very important, attendance mark करना. You guys must be knowing by now. All right. So internal style sheets जो है वो होती हैं कि when you are putting the CSS content, the style sheet instructions in the style tag separately, not in the tag itself. You use separate tags and it is defined in the head. अभी जो कर रहे थे वो बॉडी में कर रहे थे हम लोग जब इनलाइन कर रहे थे, अभी हम लोग हेड में ही कर रहे हैं. Followed, the third one is external style sheets. एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स के लिए कुछ नहीं करना है, एक सेपरेट फाइल में जो हम लोग ऊपर लिख रहे थे उसको एक सेपरेट फाइल में जाके लिख देना है और उसको .css एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं. और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मगर अब हमें अपने HTML से, क्योंकि HTML को खुद से तो समझ नहीं आएगा कि style.css में जाओ और उसमें ये फाइल्स हैं तो इससे हम डेटा निकाल लेंगे. तो अब हम लोग एक लिंक टैग यूज करते हैं. इस लिंक टैग के बारे में भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी. ऑलराइट. सो ये जो प्रायोरिटी है ये भी हम लोग तभी डिस्कस कर लेंगे. एंड CSS का सिंटैक्स जान लेते हैं तब तक हम लोग. CSS का सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले होता है एक सेलेक्टर, कि हम लोग CSS किस चीज की चेंज करना चाह रहे हैं, किस चीज की स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, तो वो सेलेक्टर डिफाइन करता है. देन उसके बाद ना उसमें क्या चेंजेस करने हैं उसको ना एक की वैल्यू पेयर होता है, या फिर इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर बोल सकते हैं, कि कलर को कितना रखना है. तो द थिंग प्रॉपर्टी इज कलर, या फैमिली फॉन्ट फैमिली है तो उसको हेलवेटिका रखना है, एरियल रखना है, कैलिब्री रखना है, कुछ भी रखना है. तो फॉन्ट फैमिली एक प्रॉपर्टी है, उसकी जो भी वैल्यू रखनी है यू कैन कीप इट. एंड दिस इज द सिंटैक्स कि हम लोग सेलेक्टर लिखते हैं, देन वी हैव द कलर. ऑलराइट, मतलब द करली ब्रेसेस, उसके बाद तुम जो भी प्रॉपर्टी है जैसे कलर या फॉन्ट फैमिली है उसको लिख सकते हो. सिंपल एज दैट. ये भी मैं वैसे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, अभी डोंट वरी. सो क्या क्या कर सकते हैं आप CSS से? हमने सुन लिया है कि CSS बहुत कुछ करता है भैया, बहुत बढ़िया बात है, मगर इसका यूज क्या है? तो इट कैन बी यूज फॉर कलर, स्पेसिंग, फॉन्ट. अदर देन दिस यू हैव साइजेस, लाइक बॉक्स में अगर कोई एलिमेंट है तो उस बॉक्स का साइज चेंज कर सकते हो, उस बॉक्स के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर का कंटेंट है उसको अलाइन कर सकते हो, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, बॉर्डर्स बना सकते हो, बॉर्डर्स का कर्वेचर चेंज कर सकते हो. लाइक देखा है वो कैप्सूल शेप्ड बटन होता है, कई बार स्क्वायर होता है. ऑल दैट कैन बी डन यूजिंग CSS ओनली. फिर इसके बाद बैकग्राउंड्स होते हैं, पोजीशनिंग कर सकते हो, एलिमेंट्स की पोजीशनिंग मैं डिटेल में भी दिखाऊंगा आप लोगों को. अदर देन दिस यू कैन ऑल्टर मेनी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज. अब तो ऐसा भी है कि CSS यूज करके आप लोग एनिमेशंस बना सकते हो, सिंपल एनिमेशंस, एंड ग्रेडियंट्स जैसे इफेक्ट्स भी दे सकते हो. सो वी विल बी कवरिंग दैट पार्ट इन द प्रोजेक्ट, जो CSS से ब्यूटिफिकेशन हो सकता है. एक्चुअली यू विल बी अमेज्ड टू सी व्हाट द पावर ऑफ CSS इज. सो टाइप सेलेक्टर जो है, जो हमने कहा था अभी जब सिंटैक्स सुन रहे थे, तो कि एक सेलेक्टर होता है उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आते हैं. तो ये सेलेक्टर क्या है? तो जो टाइप सेलेक्टर होता है ना, ये भी एक तरह का सेलेक्टर है. इसमें ना हम क्या करते हैं कि जो भी टैग्स होते हैं, जैसे एंकर टैग है, इमेज टैग है, H1 टैग है, H2 टैग है, उनको स्पेसिफाई कर देते हैं. कोई div टैग है कि इस टैग के जितने भी एलिमेंट्स है मेरे HTML फाइल में, उन सबको ये पर्टिकुलर स्टाइलिंग दे दो. ऑलराइट, ये चीज समझ आ रही है सबको? कि ये नहीं देखेंगे कि वो टैग कहां पर है, लाइक वो पहला वाला टैग है, दूसरा टैग है, तीसरा टैग है, कहां पर है.
वो सबको दे देगा, वो किसी div के अंदर भी है तब भी, अगर h1 है तो उसको दे देगा। ऑलराइट, सो और इसके अलावा दो और तरह के सिलेक्टर्स होते हैं, वन ऑफ देम इज आईडी, द अदर वन इज क्लास। ठीक है, आईडी और क्लास में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आईडी हम, हाँ, डॉट एंड हैश, नाइस गीतांश, नाइस, डॉट एंड हैश आर यूज्ड टू डिपिक्ट देम, एंड आईडी और क्लास में डिफरेंस ये होता है, आईडी ना हम लोग एक ही बार यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आईडी, अदरवाइज वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देता है इन मल्टीपल केसेस। एंड इसके अलावा वी हैव क्लास, क्लास को हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी हैव लाइक मल्टीपल एलिमेंट्स हैविंग अ सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, तो उन सबको एक क्लास में डाल देते हैं हम लोग और उनको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दे देते हैं। ऑलराइट, सो ये चीज समझ में आ गई होगी। और अगर किसी को यूनिक प्रॉपर्टी देनी है, वी कैन यूज आईडी। सो जो आईडी सेलेक्टर है ना, वो सिंगल एलिमेंट के लिए यहाँ पे भी लिखा है, क्लास सेलेक्टर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए। एकदम सिंपल बातें कर रहे हैं हम लोग, अभी इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे ये सब। तो आईडी सेलेक्टर का सिंटैक्स क्या है कि हम लोग एक हैश लगा देते हैं और फिर आईडी लिख देते हैं, जो भी आईडी वैल्यू होती है। अगर हमने एचटीएमएल में लिखा है आईडी इज इक्वल टू समथिंग, तो हैश समथिंग, फिर हम लोग अपना वो दे देते हैं जो भी प्रॉपर्टी है। एंड ऐसे ही क्लास में भी सेम चीज होती है, उसमें मगर उसका सिंटैक्स है डॉट, डॉट लगा के हम लोग वो चीज लिखते हैं। ऑलराइट, या फिर अगर कहीं देखो ना div डॉट समथिंग, तो div टाइप के एलिमेंट्स में एक पर्टिकुलर क्लास लाइक स्टैटिक क्लास है या एबीसी क्लास है, तो div डॉट एबीसी लिखेंगे तो वो div में भी एबीसी वालों को ही सिलेक्ट करेगा। ऐसे समझ सकते हैं हम लोग इस चीज को, अगर ऐसा सिंटैक्स कहीं दिखता है तो। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, डोंट वरी। सो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि क्लास इज इक्वल टू बिग जैसे लिखा है ना, तो अब इसको पैराग्राफ के अंदर बिग है, तो ये बहुत सारे पैराग्राफ होंगे मगर बिग पैराग्राफ की ही प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो उस केस में ऐसा सिंटैक्स आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, इसके अलावा सीएसएस में 4 पोजिशनिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड रिलेटिव। तो एक काम करते हैं ना, चलो हम लोग ना कोड अलोंग करते हैं थोड़ा सा, उसमें आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। ऑलराइट, सो दिस इज द फाइल फ्रॉम वेयर सौजन्या लेफ्ट ऑफ, तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये उसकी आउटपुट फाइल है। रुको एक सेकंड, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर दूं। देखो अभी एकदम सिंपल है, बोरिंग सा है। ऑलराइट, तो हम लोग ना थोड़े से कलर्स चेंज करके देखते हैं। सबसे पहली चीज हमने देखी थी कि वो HTML का सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पे 2 फाइल्स है देखो, एक index.html, एक style.css। अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं करा है, बट स्टिल ऐसे मैंने बना के रख ली थी कि दिखा पाऊं। तो एक सेकंड रुको, मैं जरा फॉन्ट साइज को ना इंक्रीज कर देता हूँ। आई थिंक इट विल बी मच क्लियरर नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वी कैन सी दिस कि div जैसे कहा था कि एक एलिमेंट हो सकता है, डॉट फिक्स्ड मतलब div टाइप में एक फिक्स्ड क्लास। यहाँ पे देखो, अगर इसके ऊपर हवर करोगे VS कोड में तो ये खुद से भी बता देगा कि किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कि div में अगर क्लास फिक्स्ड है तो ये वैसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेगा और उसको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज देता है। काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है, लाइक बॉर्डर है, बॉर्डर मैंने रन करके दिखाया हुआ है, आगे अभी देखना। फिर बॉटम, राइट, विड्थ, पोजिशनिंग, अदर देन दिस यू हैव कलर। तो चलो एक सिंपल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, कलर से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनलाइन इस सेम कोड को कैसे लिख सकते हैं। इनलाइन में मैंने क्या कहा था कि उसी टैग के अंदर हम लोग एक स्टाइल एट्रीब्यूट बनाकर उसमें लिख देंगे। चलो वैसे करते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है वैसे ही h1, इसमें मैंने एक स्टाइल टैग बनाया, उसके अंदर लिख दिया कलर इज इक्वल टू एक्वामरीन। ये मेरे को कूल सा नाम लगा था इसलिए मैंने ये कलर डाल दिया और एक सेमीकोलन लगा दिया, जो कि सीएसएस का जनरल सिंटैक्स है। और इसमें लिखेंगे हे वेलकम टू टेकवीक। चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सेव करा, रिफ्रेश करा, ये दिख रहा है, ये टॉप वाला, ये एक्वामरीन कलर का है। रुको मैं इसको ना दूसरे कलर का कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा लाइट है। हाँ, ये कलर है, ये इसका हेक्स, ये इसका आरजीबी कोड है। ठीक है, तो ये समझ जाओगे, मतलब अगर थोड़ी सी कलर की कलर के बारे में पता है तो ये चीज समझ आ जाएगी। यहाँ देखो ये लाइट पर्पल कलर का हो गया है। ठीक है, ये हो गया इनलाइन स्टाइलिंग जो होती है ना, ये वो है। मगर अगर ऐसे करके मेरे को सबको डिजाइन करना पड़ा तो मेरे लिए बहुत मेहनत हो जाएगी। खुद सोचो कि मेरे को यही स्टाइल टैग यहाँ पे भी लिखना होगा, फिर यहाँ पे भी लिखना होगा, यहाँ पे भी लिखना होगा, ये चारों में लिखना होगा। अगर मेरे को चारों को स्टाइल करना है कि सारे H1 में ये पर्टिकुलर कलर हो, या फिर मैं चलो
ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या पता किसी को, तो मैं यहाँ सिंपल रेड लिख देता हूँ। ये देखो एकदम बढ़िया रेड कलर। चलो अब हम लोग दूसरा तरीका सोचते हैं, जो इंटरनल स्टाइलिंग थी। इंटरनल स्टाइलिंग में हमने क्या कहा था कि हेड में जाएंगे। हेड में गए, ये रहा भैया हेड। हेड में जाके हम लोग यूज करेंगे स्टाइल। वेरी नाइस गीतांश, ग्रेट। तो हम लोग स्टाइल यूज करेंगे। मैंने ना कोड पहले से लिख रखा था, तो मैं आपको अनकमेंट करके दिखा देता हूँ। यू कैन कोड इट, लाइक 1 सेकंड का काम है। ये देखो स्टाइल में मैंने कहा कि H1 टैग जहां पे भी दिखे, कि H1 टैग जहां पे भी दिखे वहां पे कलर कर दो क्या, ब्लू वायलेट। लेट्स सेव इट एंड एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। ये वाला ओवरराइड करता है, ये चीज मैं अभी बता दूंगा। अभी के लिए ऐसे कर लेते हैं। ये देखो सारे ब्लू वायलेट कलर के आ गए। कुल, ये चीज समझ में आ गई कि हमने क्या किया, H1 के सबको एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट दे दिया, जैसे कलर है, और मेरे को फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। अब देखो फॉन्ट चेंज हो गया। ऐसे ही काफी सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग। इसके साथ साथ हम लोग बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंटीक व्हाइट, ये एंटीक व्हाइट उतना विजिबल नहीं होगा, ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन येलो। देखो ये मतलब अभी तो थोड़ा सा वैसे लुक्स में उतना कूल नहीं है, मगर ऐसे प्रॉपर्टीज हम लोग इनको दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था इंटरनली अगर हम लोगों को स्टाइलिंग करनी है। मगर हमने कहा था कि एक्सटर्नली भी स्टाइल कर सकते हैं हम। अब एक्सटर्नली स्टाइल करने के लिए हमने बनाई ये फाइल style.css सेम फोल्डर में, ठीक है। अगर कहीं और भी है तो उसका एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और हमें मगर अपने HTML फाइल को बताना होगा कि ये कहाँ से स्टाइलिंग ले। तो हम लोग कहेंगे कि लिंक करो। तो लिंक के लिए हम लोग हेड में जाएंगे और एक लिंक टैग यूज करेंगे। तो ये देखो भाई, ये रहा लिंक टैग। ये लिंक टैग को हम लोग देंगे कि क्या चीज तुम किससे लिंक कर रहे हो। तो किस चीज से कर रहा है, स्टाइल शीट से कर रहा है, तो हम लोग रेल में लिखेंगे स्टाइल शीट, ठीक है। और फिर हम लोग लिखेंगे कि किस स्टाइल शीट को रेफर करना है, कि क्या चीज लिंक कर रहे हो और किस वाले को रेफर करना है। तो किसको रेफर करना है बताओ भाई इसको। तो href यूज होता है जब हमने वेबसाइट को भी रेफर किया था एंकर टैग में, याद होगा आपको। तो हमने href यूज किया था, तो इसमें भी हम लोग वही सेम चीज यूज करेंगे href। और उसमें हम लोग लिखेंगे style.css, क्योंकि मैंने फाइल का नाम style.css सेव किया है। तुम लोग कुछ और नाम सेव करो तो कुछ और भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमने लिंक कर दिया इसको। नाउ आफ्टर लिंकिंग दिस, लेट्स गो हियर। हाँ, अभी देखो मैंने उसको हटा दिया था यहाँ से, स्टाइल को, यहाँ पे जो इंटरनल स्टाइलिंग थी। अब एक्सटर्नल वाली में भी मैंने एक बना रखा है यहाँ पे छोटा सा स्निपेट। ये देखो कि H1 इज इक्वल टू कलर, मतलब H1 में कलर इज इक्वल टू सैल्वन, मतलब ये डबल कोलन जो होता है ये असाइन करने के लिए यूज होता है CSS में। इसके अलावा लेट्स जस्ट चेंज समथिंग एल्स एज वेल। क्या करें हम लोग, लेट्स चेंज दिस फॉन्ट साइज, चेंज करके देखते हैं एक बार। फॉन्ट साइज हम लोग कर देते हैं स्मॉल, स्मॉलर कर देते हैं। चलो एक्चुअली ये काफी अच्छी चीज है। लाइक अगर तुम लोगों को नहीं भी पता है अबाउट CSS की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, देन यू कैन गो ऑन VS कोड, और उसमें अगर तुम लोग ऐसे कॉलम बना के टाइप करने लगोगे ना, जैसे एस किया, तो मेरे पास सारे वो आ जाएंगे कि या हाउ आर यू टर्निंग कमेंट्स इनटू नॉर्मल कोड। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल, सेलेक्ट करना है कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश। इट लुक्स लाइक, ऑलराइट। सो इसके अलावा मूविंग फॉरवर्ड, लाइक हमने फॉन्ट को स्मॉलर कर दिया था, चलो इसे वापस हटा देते हैं। एक बार हम हायरार्की समझ लेते हैं। तो हायरार्की इसमें ऐसे सोचो ना कि तुम्हें सबसे पहले कौन दिखेगा, जो तुम्हारे सबसे पास होगा तो तुम उसकी बात मान लोगे। तो सबसे पास कौन है एक टैग के, लेट्स से इस टैग के रिस्पेक्ट में सोचते हैं। ये इसको अनकमेंट कर देता हूं मैं वापस से। इस टैग के रिस्पेक्ट में सोचते हैं, ये जो H1 स्टाइल कलर ये लिखा है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो इसके लिए सबसे क्लोजेस्ट कौन सा होगा बताओ, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, जल्दी बताओ चैट में लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, बाकी सब भी लिखो जल्दी, बताओ।
ग्रेट। हाँ, तो इनलाइन होगा क्लोजेस्ट, तो सबसे पहले ये इनलाइन की बात मान लेगा। तो इनलाइन ने कहा कि भाई कलर इज रेड, तो कहेगा ठीक है, कलर इज रेड, ये भी ठीक है। तो देखो कलर रेड हो गया, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लाइक ऑन द आउटपुट पार्ट कि कलर इज रेड, ये ऑन द टॉप। सो अभी ऑल्दो the color of H1 has been assigned as salmon, still the color is coming out to be red on the one that we have assigned like in the inline format. सो मूविंग ऑन, एक और है हमारे पास फिर कि जो इंटरनल है। तो इंटरनल वाला कहता है कि भाई बात सुनो, सिंपल सी बात है कि एक्सटर्नल वाला तो बाहर का है, पहले मेरी बात सुनो ना, मैं सेम फाइल में हूँ। तो सेम फाइल में चलो फिर उसकी बात सुन के देखते हैं क्या लगता है क्या हो जाएगा। अब बताओ। तो इंटरनल में क्या हुआ, अब देखो इंटरनल में भी इनलाइन को ज्यादा प्रायोरिटी मिली एंड उसके बाद इंटरनल को मिली। ऑल्दो अभी भी कलर सैमन वाला जो है वो टैग एक्टिव है, मगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना कि इंटरनल कह रहा है कि कलर तो ब्लू वायलेट था, वो कह रहा था कि सैमन है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो मैं पास वाले की बात सुन लेता हूँ। तो इसने सबसे पास वाले की बात सुन ली, तो H1 टैग को इंटरनल वाले ने कहा था कि इसका कलर ब्लू वायलेट है, तो वो इस बात से एग्री कर गया और कलर को ब्लू वायलेट कर दिया हमने। ठीक है, हटा के देख लेते हैं एक बार। देखो अब सैमन हो गया, तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी आती है एक्सटर्नल वाले की। तो सिंपल प्रायोरिटी का ऑर्डर है इंटरनल, देन इनलाइन, देन इंटरनल, देन एक्सटर्नल। ऑलराइट, एकदम सिंपल है। और थोड़ा सा सिंटैक्स और देख लेते हैं एक बार। डिव में हमने कहा था कि क्लास क्लास डाल के भी देख लेते हैं, तो चलो क्लास डालते हैं। इसमें एक क्लास डालता हूं मैं, उससे पोजिशनिंग भी समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो पोजिशनिंग 4 तरह की थी, यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है। चारों तरह के एक एक क्लास बना दिए, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड स्टैटिक। तो जो स्टैटिक पोजिशनिंग है ना, वो वाली पोजिशनिंग है जो HTML ऑलरेडी ऑफर कर रहा था अपनी ब्राउजर स्टाइल शीट में, कि तुम कुछ नहीं भी डालो तब भी तुम्हें स्टैटिक पोजिशनिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर तुम नहीं भी स्पेसिफाई कर रहे हो तो पोजिशनिंग बाय डिफॉल्ट इज स्टैटिक। गाइस अटेंडेंस मार्क कर देना जरूर से, मतलब अब तो पता ही चल गया होगा अटेंडेंस मार्क करना सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंड करने से ज्यादा, तो कर देना, बाकी अटेंड भी करो। ठीक है, तो स्टैटिक की बात कर लेते हैं। स्टैटिक में हमने डिव का नाम रखा है स्टैटिक, उसमें लिखा है पोजीशन स्टैटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लास का नाम स्टैटिक लिखोगे तो उससे काम नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान रखना कि क्लास का नाम अगर स्टैटिक रख दिया तो भैया काम बन जाएगा, नहीं नहीं बनेगा। तो उसमें आपको मेंशन करना होगा स्पेशली कि कौन सा यूज कर रहे हो। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट होता है ऑल्दो। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इस डिव को दिया था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके अराउंड ना एक बॉर्डर बनाया है और अंदर का टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको अपना CSS स्निपेट। इसमें भी लिखा है मैंने बॉर्डर 3 पिक्सल्स का होगा। इसको मैं चाहूँ तो 10 का भी कर सकता हूँ, देखो। बट इसकी जो स्पेसिंग रहेगी वो बाय डिफॉल्ट जितनी सेट होती है फॉर एनी HTML पेज, वो उसी स्पेसिंग और पोजीशन पे ये फिक्स्ड रहेगा अभी के लिए। चलो इसको 1 पे करके छोड़ देते हैं। ये था स्टैटिक। ठीक है, इसकी पोजीशनिंग हमने अभी बेसिक HTML का जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही करी है। तो यहाँ पे एक सेकंड कुछ एरर आ रहा है, मैं एक बार इसको हटा ही देता हूँ। हाँ, बीच में एक वो है, इस पूरे को ही कमेंट कर देता हूँ मैं, ये लो। ठीक है, तो ये अब दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसके बाद हम दूसरा स्टाइलिंग का तरीका, पोजिशनिंग का तरीका देखते हैं। दूसरा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ना हमारा ये वेब पेज है, देखो ये इतनी लेंथ का वेब पेज है, स्क्रोलेबल काफी सारा है इसमें से। तो उसके रिस्पेक्ट में एक पोजीशन अलॉट कर देता है जो हम स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। लिखेंगे एब्सोल्यूट, तो मैंने ना यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर रखी है ऑलरेडी एब्सोल्यूट की। एक डिव में अगर एब्सोल्यूट क्लास मिल जाए तो क्या करना है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, टॉप से 80 पिक्सल्स पे रखना, मतलब कि जो वेब पेज है ना उसके टॉप से 80 पे रखना, एंड राइट से 20 पे रखना, विड्थ 200, हाइट 100 एंड बॉर्डर सेम रखा है मैंने। चलो मैं दिखाता हूँ
ये देखो, यू कैन सी दिस, आई गेस ये दिख रहा है। अब ये अगर मैं इसको स्क्रॉल भी करूंगा ना, तो इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द वेब पेज ये चेंज नहीं होगी। लाइक वेब पेज है तो ये वेब पेज का एक पार्ट बन गया, वैसे समझ सकते हो कि अगर वेब पेज को मैं ऊपर करूंगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। सी आई एम स्क्रोलिंग एंड इट्स गोइंग अप। क्लियर है ना ये चीज? ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा हमारे पास आता है फिक्स्ड। चलो फिक्स्ड करके देखते हैं, चीजों को फिक्स कर देते हैं। फिक्स्ड क्या करता है, कोई गेस करना चाहेगा? चैट में लिखो अगर गेस करना चाहोगे तो, वरना मैं बताता हूँ। मतलब फिक्स्ड ना वन ऑफ माय फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट्स, क्योंकि फिक्स्ड काफी ज्यादा यूज में आता है। अभी प्रोजेक्ट में भी तुम लोग यूज करोगे इनफैक्ट। तो जैसे कभी किसी वेबसाइट पे गए हो, उसका नैप बार देखा है, फेसबुक वगैरह का नैप बार होता है, तो ऑन स्क्रोलिंग भी ये फिक्स्ड रहता है। ये बेसिकली ब्राउजर का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, कि एक वेब पेज जिस स्क्रीन पे दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी इसको ना एक फिक्स्ड क्लास के अंदर डाल दिया। तो क्लास का नाम फिक्स रखने से फिक्स नहीं हो जाता, ये चीज क्लियर रखना। यू हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन। तो मैंने पोजीशनिंग यहाँ पे स्पेसिफाई की है कि फिक्स्ड होगी। तो ये बॉटम से 0 के डिस्टेंस पे होगा, राइट से 0 के डिस्टेंस पे होगा, और विड्थ इसकी होगी 300 पिक्सल्स। चलो लेट्स डू। ऑलराइट, अब ये देखो बॉटम कॉर्नर पे ही स्टक है। लाइक कभी वो देखा हो, कस्टमर सर्विस बटन होता है कोने में, चैटबॉट का बटन होता है, वो यहीं पे फिक्स्ड होता है, चाहे कुछ भी कर लो। तो उस केस में ये काम आता है। या फिर अगर ऊपर नैव बार रखना है कि तुम कहीं पे भी चले जाओ, स्टिल द नैव बार शुड बी ऑन टॉप। इन दैट केस ऑल्सो फिक्स्ड इज यूज्ड। फिर इसके बाद एक और चीज है, वो है रिलेटिव। रिलेटिव इज बेसिकली जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए थी ना, उसके रिस्पेक्ट में ये कितना मूव करा हुआ होना चाहिए। कि लाइक अगर ये इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ होता तो ये यहाँ पे होता है, यहाँ कहीं पर, यू कैन सी हियर, यहाँ कहीं शुरू हुआ होता। बट मैंने इसको ना कहा कि रिलेटिवली इसको लेफ्ट ऑफसेट दे दो एक, कि लेफ्ट में मूव कर जाइए बाय 100 पिक्सल्स। तो ये ऐसे हो जाएगा कि ये 100 पिक्सल्स अपनी ओरिजिनल जगह से मूव करा है। तो अपनी ओरिजिनल जगह से मूव करने के लिए यू नीड रिलेटिव। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये चार थे अपने पोजिशनिंग के तरीके। यहाँ पे मैं रिलेटिव दिखा भी देता हूँ। इसमें मैंने कहा था लेफ्ट से 100 हो जाओ, विड्थ इतनी रहेगी, इतनी रहेगी, बॉर्डर का कलर ये, और इतना डायमेंशन है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आई थिंक। कैन वी चेंज इट्स बैकग्राउंड? यस यस, यू कैन चेंज इट्स बैकग्राउंड। रुको मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ इसका। बैकग्राउंड कलर बताओ क्या करूं? कलर बताओ भाई। अंकित, नहीं अनिकेत, कलर बताओ जल्दी। 3 2 1 ब्लू। चलो गुड, देखो ब्लू हो गया। बड़े अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, तो पेज थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ऑल्दो बाकी अभी के लिए हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव वाला पार्ट ना आगे अभिनव सर कराएंगे आप लोगों को। सो विल बी मूविंग फॉरवर्ड नाउ। एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हमने क्लास सेलेक्टर्स, आईडी सेलेक्टर्स, टाइप सेलेक्टर्स तीनों देख लिए। हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर कर ली, कैसे सिंटैक्स लिखना है ये देख लिया है हमने। ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी क्लियर है ना सबको? जो सबसे पास है उसको सबसे पहले उसकी बात सुनो। ठीक है, इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स हैं उनको भी देख लिया था। बोलना मत कि ब्राउजर स्टाइल शीट भी दिखाओ, वो ऑलरेडी देख रखी है। जब HTML में कुछ स्टाइलिंग नहीं कर रहे हो, दैट इज ब्राउजर स्टाइल शीट। ऑलराइट, सो इसके अलावा ना कुछ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज भी हैं, तो मैं ऐसे बता देता हूँ, बट विल बी कवरिंग दैट इन मोर डिटेल लेटर ऑन। तो एक होती है इनलाइन। तो इसमें ना जो एलिमेंट है वो it appears as an inline element, that is its height and width property will have no significance of its own। मतलब जो जिस div में है उसकी height और width के according inline elements चलते हैं। फिर एक ब्लॉक है, ब्लॉक में it starts with a new line। अगर तुमने एक ब्लॉक एलिमेंट बना लिया, अदरवाइज ये अगर तुमने नहीं बनाया होता तो वो उसके साइड में चालू होता। मगर अगर तुमने ब्लॉक बनाया तो वो नेक्स्ट लाइन में चालू होगा, एंड देन इट विल हैव इट्स होल विड्थ एंड हाइट एज वेल। ठीक है, एंड अदर देन दिस वी हैव इनलाइन ब्लॉक। द
in this you have a inline block container, like एक block container है, उसके आगे तुम्हें एक और container चाहिए, but वो next line में ना जाए, तो inline block को use करते हैं in that case. Alright, so after this we have a bit about JavaScript, just a brief description, and Abhinav will be taking over from here, and he'll be moving forward with a great project. Like आप लोग अपने CVs को एक वेबसाइट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, वो चीज दिखाएगा वो आपको, and he'll show you how attractive CSS can make a website. ठीक है? We cannot share the PPT, although you can have the recording. We'll be having the recording on YouTube. So yes, now let's welcome Abhinav. And Abhinav, Hello. yeah. Am I audible? Yeah. हाँ Will you take over from here? हाँ. All right, great. Thank you so much. So hello everyone. Hopefully my screen is visible. Wait. तो यहाँ से शुरू करते हैं. तो अब तक you have learned about HTML, you have learned about CSS. So the other thing that is major thing in the part of web development is JavaScript. So this means just specify that every web page you see is incomplete without JavaScript. Any interactivity that you put in the web page is because of JavaScript. Just similar, some kind of animations can be created only with CSS, but mostly it is JavaScript that we create interactivity. Let's see a simple page. This is expense tracker. We will not be making this. It is just made by me to understand you JavaScript. So what all you are seeing right now is just HTML and CSS. But to add interactivity, let's say this simple expense tracker function. If I add my salary, SLARE, so let's create a good amount. So if I add transaction, you can see your balance. This is an interactive page, means you enter the text here and you see results somewhere else, or on like Facebook, you post on your site and the post is available on any site. So let's enter another milk for rupees. Let's take expensive milk. Acha. So you have expended on milk, so you have to write a minus thing. So this is simple. I will be sharing the link on the chat. You all can try the website. It will be a simple web expense tracker. So now let's move on to the project. So we will be making a portfolio website, something like this. Let me show you preview. So it is a random picture. It contains of these sections. So scrolling down, it's my projects. Looking a decent website with small amount of animations. So as you can see the functioning of navbar. So I will request everyone to go to this link. I'm sharing this link on the chat. So when you will go to this link, it will be taking some time to load. After it get loaded, you click on remix. Remember to click on remix with. So when you will click on remix, it will create your copy of the project on your site so that you can edit and see the results on the right. So it is creating a copy. Yes. Copy has been created. Everyone will be having their own copies at their end. If I am right, please write on the chat that you have been through this step. Write race if you are able to make your own copy. Link is working fine, Ansh. Yes. Yes, you have to click on remix button. Okay, I think it will be done. Sometimes network speed also depends. So you have to follow the steps written in 2.md. Simple steps are there. We have written HTML, then CSS. So the HTML code that is available here, you have to paste that code in the HTML file.
index.html, and the CSS code written in 2.mb you have to paste in CSS file style.css. So let us look at the boilerplate code that I have provided to you. So most of them was explained to you by Sojanya, but I have also included some Google fonts. This is kind of external style sheet that can be accessed using the links. So let's start with step one. We will making a navbar with firstly. So copy the step one HTML, paste it. So as you can see the execution at the right, it will be automatically reloaded the page, and you can see we have a div, and the div we have four A tags, anchor tags, five anchor tags with the href. Href tags basically used to navigate through the site, like I am going to about section project section. It will not be working right now because it do not have other sections. It will be working till the end. So now let's paste the CSS. Uh, File.css. So let's understand what the CSS behind this. So first class is top nav. So this div has a class top nav. We are editing this div. So what we want is position to be fixed. As Ansh explained to you that if a position is flicked, the navbar remains constant, means sticky on the side. So we want that with the navbar. So we make the position fixed. Font size 25 pixel, width 100%. 100% font size is very simple. You can increase, decrease according to your screen size. Talking about width, width 100% will include the from right to left, no space between anything white spaces. If I do it to let's say 40%, so it will be like some half of the portion, and you can also click on the preview here and go to new window, so you can see live site. So 40% means 40% of the page, but we want the navbar to be 100%, so we will take it 100% to the of the page. So this will be your live site going on. So you can click on preview and preview in the window, new window, so you can see the site. Okay, so next we have edited the top nav A. So what does this specify means? A top nav is a class, and we are trying to access the A tag, anchor tag in the top nav with this CSS. So text align center, simple text decoration none. So text decoration none basically signifies that when you apply A tag, it is a simple. If I remove the CSS, you can see underlines and the blue color in the CSS. It is the browser style sheet that it is automatically in the HTML. So we have to remove that. We don't need anything. So we write text decoration none. Color white. You can also write it red. Anything you want. So it will be red in color. Anything it will be customizable as per your need. So let's keep it red. Height 100%. So that is general. Padding 20%. Let's understand padding. So what is padding means? You can see this is a box. So the box is the distance between H and the box, white line. It is called the padding. Means internal distancing between any div is called padding, and external distancing is the margin. So we will understand margin later on. So the other effect we have added here is hover effect, and you see that when we take our mouse to the home about any of the thing, so you can see a white color background. So we have triggered it using this. To trigger the hover effect, we have to write the CSS like this. Top nav A means to select the A tag inside the top nav class and then trigger the hover action. So when we trigger, what we have to do is specify in the bracket here, change the background color to white and the font color to black. This is what is happening when we hover. It is changing the background color to white and font color to black. Or we can also use green, any color you like. So it will change the color to black, from black to green. Okay, so I think navbar is clear. So let's move on to the second step. Second step, we will making the main page, home page. So let's paste it in the second step. So when you paste it, you can see this is a big GIF here. This is, I took it from anything from net. So you can also take it from your LinkedIn or your Facebook or anything and replace that link here.
or else you can upload that file into assets folder here. So you can upload and click upload an asset, and let's say I upload a dragon. So it will be uploaded here, and after it is uploaded you can use it like copy the URL, copy the URL, and in index.html you can replace the link. And when you go to the other side, you can see the dragon or anything you like you have, or you can take the link from your anything of Facebook or LinkedIn and paste that here also. So this is my name, so Abhinav Agarwal. Let's close this for now, and we will match from that site at the end of our project. So Abhinav Agarwal, full stack developer. You can write anything, your name here in the H1 tag, and the full stack developer, like anything you want to write. Like most of you will be front end developers after this session, so you can write front end web developers. So HTML part is done. So let's style it a good way. So copy the style.css styles from the step 2 and paste it in the step 2 section. So let's see. So a very good style now. So let's understand what happened with this CSS. So first of all, we are targeting the head. So head was the class I made it, head. And ID head is used for the navbar, as the we are we are taking the person to the head when it clicks on the navbar. So it is already at home, so it will be remaining here. But when we make two or more section, you can see the working of it correctly. So then it has an image, a div, and an h1 and p tag. So let's style all of these separately. This is simple styling of head, and you have used a background image as another image on it. So you can use this or use your own anything. Then it is image tag. So the image head, inside the image was this one image that we uploaded. So head image, we need the height to be 350, width to be 350, anything like I think it should be 250 250. You can experiment with your image and what suits the best, you can apply it there. So 250 250 is better, so I stick with it. And the border radius property. So border radius property is making the border curves. So at 50% the borders are equally curved so that it look like a circle. If I do it 10%, you can see the difference. It will be slightly curved. If you increase this to 30%, it will be something more curved. So we used to 50% for making it a complete circle. And the next is h1 head, that is my name. We style it using the font size 24 pixel font weight. Font weight properties describes the boldness of the font, means how thicker is the font. Let's say if I reduce it to 100, and you can see that it is, oh, I reduce something else, head p. So let reduce for h1. So if you take it to 100, so you can see it is a very thin font. We don't need it, so I will take it to 700. You can take it to 900. It has from 100 to 100 in 100 multiples from 100 to 900. So I will make it 700 again. So this section is also complete. I am moving little fast because we have to complete it. So you can modify it, background image, anything you want as per your own need. Now let's move on to step 3. Step 3. Now this will be the about section. Let's start with the HTML. So as you have pasted the HTML, you can see the about section. It is a simple HTML now. H1 tag and your description. Anything you can describe about yourself, you can write here. So the second will be the ID. This now you can see the functionality of navbar currently. So if I go to top and click about, it will take me to the about section because it is referring to this ID. Next, let's add the CSS. Step 3 CSS. Yes. After adding a CSS, you can see how the section changes. It looks completely different.
So what we have changed is the about the div. So div, the background color is white. It is also by default. So it's our choice to write it, or you can change the color to, let's say, gray or light blue, or anything you want. It is not necessary to light blue, green, anything. So white ही अच्छा था. So we can also remove because default color is white. So if you remove it, no changes will be there. And the color is the font color, that is black. And the text align center. So we have to align everything in the center align. This is general as you do a Word document or any other. Padding is 50 pixel. Again, the padding, let's use a Google developer tools to understand better about padding. So, so as you can see in this section, the green area is the padding, means in the div from the internally how much you distance you are taking. We have specified to 50 pixels. So from each of the side, it has been given a 50 pixel spacing. Okay. Wait. So next is H2 size. So simple font size styling, describing the size and the font weight. Then it is padding tag, p tag. Sorry, p tag. When we p tag, we have used the padding and the font weight 200. So again in the p tag, you can see the distance between this tag and this tag. So this is because of padding. So this was simple section and it is over. So let's move to step 4. That will be the project section. So copy the step 4. Then let's, if anyone have some doubts at this point. Okay, so I will allow you to talk. Nee, nee. You can type it. I will wait for 2 minutes if anybody have some doubts. No, chalo, theek. Let's continue. Let's continue with the step 4. I think I have copied the step 4. So let's paste that in the step 4 part. So let's again see what the HTML looks like of step 4. It is simple H1 tag, then an H3 tag, the paragraph tag, and a button with the learn more option. These are my 3 projects. You can add any of your school projects or any of the project that you like to show on your resume website, and you can link that to the learn more button. I have not linked right now. So let's do the CSS part and then understand what is going on. So after adding the CSS, let's look at the complete changeover. So let's try to understand what we have changed. So firstly, we have arranged all these 3. By default, everything we add in HTML is like column wise. It adds one below another like a stack. But we have to add everything in a row in the project section. So we have used a flex container. Flex container is a widely used class, so it is generally available by default in many external style sheets. But we have made it the CSS for you right now. So how we define flex container is like a display flex. So as the answer explained you the properties of display, like flex, we can use to arrange them in a row and justify content center so that everything is center aligned. The next is the everything we add in a flex container. Let's understand this first. There is a flex container and then 3 divs inside it. So basically, when we add any div inside a flex container, it gets added to the row. So this we have explained using the CSS div. तो फ्लेक्स कंटेनर के अंदर का div को हम टारगेट करेंगे. We target the flex containers div and apply the CSS to it. So border radius 20 pixel. As you can see, there is a slight curvy borders. Width 350 pixel. You can change this according to you. This is a background color I have chosen so that it matches with the theme. Then margin top, font size, and padding. These are similar styling as we have covered till now. Then let's go to the H3 flex container div targeting the
H3 inside the flex containers div. So we reduce the margin to 0 and then flex containers div to the button. We have a stylized button in the, let's try to guess what have been stylized. First of all, black color background was earlier was white, it is now black. Font color white, but earlier it was black. And there is slightly border radius you might notice at your end. So similar, we have height width defined as per your convenience, your screen size, font size 20 pixel, then background color, font color, border, and border radius, a slight border radius, so it looks beautiful. The font family I have used outfit. You can use any of the font family you like. So we are halfway through the project, and I think it might be very good for you till now. So let's add the another section. I think it is a large section. Only two sections are left: the skill section and the contractor section. So let's make the skill section, and you will learn about animation in this section. So let's see what HTML looks like. So what is basically, it is a H1 tag and unordered list. There are two types of list as explained: unordered and ordered. So in unordered, it is signified by dot. So what are changes we have to make in CSS? Let's try to guess. First of all, we have to remove this dot. I don't need this dot anymore, and then arrange all this thing in a flex box like this, so that everything comes like a line. Okay, so let's understand the CSS part. So firstly, we have described style for skill, the container, whole container, display flex again to make it everything align flex direction in the column. This is by default also, and I have specified to make you understand more. So that align item center again to make everything center aligned. Then padding is 50 pixel, so that the padding means, let's reload this and see what have happened. So as you can see, the padding is HTML and the distance between this circle. It is the padding, and we have aligned 50 pixel. And then background color white. Again, you can change all of these as you can play with this. Let's say I change this with any shade of the red. So it will look like something very weird. So let's make it what it was, white. Or you can use a light blue shade. It will also go. Okay, so next thing we have made is the skills H1 tag, simple font size, styling, margin, font size, and margin bottom. Margin bottom. Let's understand margin right now. Using the, you can right click inspect, and you can use this arrow to see what are the things. So margin is the yellow part you can see right now. It has zero padding, so internal div has zero distancing, and the margin is the yellow thing which we have specified, I guess 10 pixels, 50 pixels. So this is the distance between the div and the next div to it. The next div is this one. So this one and this one are having a distance of 10 pixels as specified in the margin bottom. So as margin can be specified in four ways: top, bottom, or right or left. Similar to padding, top, bottom, right or left. Or if you specify only margin, it will give margin similar from all the directions. The next we goes to is the unordered list. So we have we are targeting the styling of unordered list. So unordered list again, flex direction row and flex display flex direction row means we have to add everything in that column, single column in that row. Again, the flex is wrap. Let's see what is wrap used to. If we remove the wrap, everything will go out. Means no bounds will take. If we wrap it, it will wrap. It's bound into the div. So we wrap it so that it is bounded to the div. So it comes like this. It is bound in this div which we have specified. And then text align center, justify content center, basically to center everything. And the list style none. The list style is none defined for the bullet point that we wanted to remove from the list. Then we are targeting every item of the list.
let's understand from HTML. The unordered list, and unordered list के अंदर we have many items, 1 to 7 items I guess, 1 2 3 4 5 6 7 items. So we are targeting unordered list in the previous CSS. This one, all the elements of the list will be targeted with this, and only the li all the li items matlab inside the list, each li items can be css given css separately, so we are giving it right now. So display flex again, justify content center to center everything, these two for centering the everything. Height and width, so height and width of this box is defined here, so it is 200 by 200 pixel box. So again we have used the border radius 50% to give it a look of circle. If you remove it, it will be a 200 cross 200 pixel box. So it is a 200 pixel box. So if we give border radius of 50 pixel, it becomes a 200 radius circle. The border color is so how do we define border? Border is the white border that you can see it here. So it is defined using this border attribute, border property. So first attribute is given as the width, how much width you want. Let's say give it 50, so you can see a very weirdly big border, 50 pixel on each of them. So let's keep it 5. So it is solid, it is like 3 to 4 kinds of border we can, solid, dashed, or different kinds you can explore on net. And this one is the color of the border, so it is 24. Any color you can choose, I have chosen this as per my preference. You can choose any other you like. The other thing is border, I have explained. Margin also I have explained. The transition, so transition is the main part for animation. So as you can see, when we hover on any of the element, it gets a little bigger in size. So how we are targeting is using transition. So transition specifies 3 properties: all, ease, and time. So all means the transition you want in all direction, and ease mean ease transition. We do not want a just but means just navbar is not ease, so it is taking everywhere us in just a click. It is in ease in animation and ease in ease out animation. And the time. So if I increase the time to 5 seconds, so what you can see, the animation will be completed in 5 seconds. It will begin getting slower and slower. So optimal time is 0.5 seconds. So how we are means we have not specified anything to size to grow till now. So we are specified here. So what are we specifying is the skills UI li, target the skills, skills skill class, skills class, and then the div under the unordered list the li. So this we targeted again, and the hover element. When we trigger it hover, when we hover over it, what you have to do is transform it to scale, and the scale ratio 1.1. Let's say if we give it 2, so it will transform to 2x times. So it is looking more okay. As per your preference, as you like on your website, you can give the scale ratio. So it can be also 3 times. So it will go out of the page. So I will make it 1.5. Okay. So this section is also complete. And you can see the navbar is now something of useful thing. Now let's move to the last step, and it's the contact us section. Okay. So when we go to contact us, let's move step 6. Paste the context. Let's look at the HTML. So these are the symbols I have chosen for you to the for your Instagram and anything you can. I have taken them from net, but they are very bad right now. And what you can see is that these are overlapping also. So we have to work greatly on the CSS here. So let's start working on the CSS. So as you copy the CSS part and paste in the step 6. So let's I didn't understand your HTML of this part correctly. So it is given an ID of explode that is explained in CSS. You will get it later. The ID for navbar,
class profile, and this is the a tag. So let's make it here. So what is there? A div. What is there? A div, a ul, and ul have lis. So what lis have is a tag and an image tag. So they are having two tags. Then a tags means when you click over this image, so you shall be redirected to somewhere else. So that has been defined on the a tag as for the name I'm explaining to you using href tag. So this is my GitHub profile link. So you can add your GitHub profile link or your LinkedIn profile link, any of the links of the respective icons. So this icon is for the GitHub. So I've provided my GitHub. This for LinkedIn. So I've provided my LinkedIn in the href part of the tag. So after this CSS, let's see how the sites look. Oops. I think there is some error mistake I made. Let me. I think I copied the HTML wrong way. While he's editing, I just wanted to let you guys know that we'll be starting with the quiz after this. So please stay tuned after the project is over. This is the last step going on right now. So we'll be starting with the quiz after this. So guys, there is a bit mistake in the HTML part. So you all can correct it. So the li tag there is not li tag in the third li tag is placed wrongly. So you can just remove it and place one line below. And after you get prettier, it will look prettier also. So let us explain the CSS part. Let's look first. It is being corrected. So ignore this section for now. So ignore this section. We will handle it later. So what the contact me section is about is just a contact in the small animations. So what we are animating is a rotate animation this time. And firstly, I think this background was prettier when white. So let's change that to white first. And then I will explain you the background that I have created over there. So when it is white, you can see a gradient like a background here we have applied. So what is gradient? Basically, we have specified two shades. The one that you can see at the below part and the one that you can see at the top part. We have specified it here. Linear gradient. In the background, we want a linear gradient that ranges from the white to the blue shade that I have chosen. So it will this function will always automatically convert the all the shades that come in these two ranges and apply all these here, and it looks good when you apply the gradient. So next we move to the h1 tag. H1 tag, simple contact. As we edited all the others, we will also edit this one, and then the ul and ulli. So the unordered list we are targeting here, and unordered list each li we are targeting here. So it is a simple target of display flex and list and learn to remove the dots, bullet points of every list, and then oh, oh, to leave it. This is a simple error, but it do not affect your code. So margin 20 pixel, we are specifying the margin of 20 pixel for each of them, and then we are transition. This is the main transition. As in the previous one, we are specifying all directions, time taken to do a transition, and ease in transition.
So this is the image height. As you can see, the images were really large earlier, so we have changed the height to 50 cross 50 pixel, and then the hover effect. This is the transition. As you use the earlier, we used the scale transition. We use the rotate transition here, so it was 360-degree transition right now. So you can see as we hover, it will rotate to 360 degree. You can change this as per your preference. Like if I do it 90 degrees, it will just rotate. Let us reload. It will reload 90-degree only. So you can also define 720, 7000. So it I have defined a very big number, so you can see it will keep on rotating for a quite a long. So rotating like mad. So we can you can choose any of the thing you like. So I think 360 was perfect. And with this, we finish our portfolio website. Let me check with the glitch coming here. These 3 bullet points. So I have also have the code here with you. So you can go it here. This is another hosted site. So as Ansh mentioned, we can host on GitHub pages. This is the website I hosted on the GitHub pages. So you can also see the code with the here. So I have also written the code all here. So you can also copy this and paste in the HTML file. So this is a different code kind of. So you do leave it, but you can also visit the repository. Let me give you the link. So I don't think anything else. So you all can open the link and see the code, complete code here. And I think that's all for today. So any problem that you faced? कहूट सर आ गए हैं. कहूट कहूट सर, सर नाइस. सबका क्विज अरे लेंगे. अरे अरे बिल्कुल. अरे देखो देखो सब आ जाओ जल्दी जल्दी, सब ज्वाइन कर लो गाइस. कहूट सर ओपी. नाइस. ऑलराइट. सो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो एंड we'll be starting with Kahoot in a while. I'm sharing the link and the screen as well. Just wait a minute. Okay. So मजा आया भाई सबको? सबने किसी ने इम्प्लीमेंट कर लिया साथ साथ द वेबसाइट, और विल यू बी डूइंग इट लेटर ऑन, लाइक कोई प्लान्स है? बताओ चैट बॉक्स में. बनाएंगे, अब बनाएंगे. नाइस. बनाओ बनाओ, बिल्कुल बनाओ यार. अभी काफी टाइम मिलेगा तुम लोगों को. यू विल मेक अ गुड वेबसाइट एंड यू विल एक्चुअली हैव स्किल्स टू पुट ऑन इट. और बाकी अपने दोस्तों वोस्तों को बुलाओ यार जल्दी. कहूट खेलेंगे अभी. सबको बुला लो. रात को बनाते हैं. नाइस. सो द गेम पिन इज 172851. मैं लिंक भेज दे रहा हूँ. मैं लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ आपके. एंड एक्चुअली वेब डेवलपमेंट को सीखने का काफी अच्छा तरीका है कि खुद एक्सप्लोर करो. लाइक अगर किसी के पास वीएस कोड है तो काफी ज्यादा तुम लोग सिर्फ वो चीज करके सीख सकते हो कि उसमें तुम लेटेस्ट क्लिक करोगे ना तो तुम्हें सजेशंस आ जाते हैं. सो उससे तुम लोग एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट कर सकते हो. राइट.
So 19 people have joined. I'm expecting a bit more, so we'll wait for a while. उसके बाद start करते हैं guys. बाकी काहुट क्विज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो ऑल यू हैव टू डू इज आंसर द क्वेश्चंस एज फास्ट एज यू कैन, एंड करेक्ट आंसर्स जो भी सबसे पहले करता है उसको हाईएस्ट पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, एंड एंड में जिसके ज्यादा होंगे वो जीतेगा. बाकी वेब डेवलपमेंट का एक और फायदा है गाइस, क्या कहते हैं, काफी स्वैग्स और गिफ्ट्स मिलते हैं. इफ यू इंटीग्रेट somebody's technology in your website ना, then they offer you some stuff for doing that, like because you are basically promoting that technology. So ऐसी चीजें मिलती रहती हैं, स्वैग्स काफी सारी. मतलब अगर कोई अच्छा वेब डेवलपर होता है ना, he or she has like a t-shirt for like 15 days, like अगर वो साफ ना भी करे तो वो पहन सकता है 15 दिन तक, उसको इतनी टी शर्ट्स होती हैं. देखो, दिस इज आल्सो वन ऑफ दोस. आई हैव अ लॉट ऑफ टी शर्ट्स एज वेल. मतलब सो यू कैन जस्ट गेस, लाइक काफी सारी मिल जाती है. ये भी है कि काम करते करते भी साथ में गिफ्ट्स में मिलते हैं. सो 36 पीपल हैव जॉइंड. लाइक अगर कोई और भी आना चाहता है जल्दी आ जाओ सब. विल बी स्टार्टिंग विद द गेम. गेम पिन अगर किसी ने लिंक नहीं क्लिक किया या फिर किसी और डिवाइस से आया है, तो द गेम पिन इज 172851. You can still join. Are, in the meantime, we have Sakshi ma'am with us. Sakshi ma'am is the membership coordinator of IEEE DTU. She wants to have a little chit chat. Yeah. All right.
सो एक राज की बात बताता हूँ जो साक्षी मैम ने नहीं बताई कि IEEE में बहुत सारी पार्टीज भी होती है, तो कभी IEEE ज्वाइन करोगे तो विल एंजॉय दोज एज वेल। हाँ हाँ, पार्टीज बहुत होती है। लाइक वी हैव प्रियांश सर इन चैट, ही इज लाइक द पार्टी कोऑर्डिनेटर। पार्टी होगी SIG की क्या, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड में तो पक्का पार्टी मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छा, एक और, अगर जो भी ये पोर्टफोलियो वेबसाइट मेरे को भजा के भेजता है ना, तो मेरा नंबर देख लेना, ग्रुप के एडमिन्स में होगा, तो उसको मेरी तरफ से GFG का कूपन 300 रुपए का, कोई भी कोर्स ले लेना ऑफिशियल साइट से। अरे हाँ हाँ, अरे करो तुम्हें, मैं भी कुछ कुछ दूंगा। चलो डन है डील, जल्दी जल्दी बना के भेजो बस। मेरे पास भी कुछ क्रेडिट्स वगैरह पड़े हैं तो मैं भी बांट दूंगा। तो बनाओ प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी और शेयर करना बस। सो चलो लेट अस बिगिन लाइक इन 2 मिनट्स, ठीक है। सर अभी आपने ही पार्टी देनी है इवेंट के बाद। भाई जतिन सर पार्टी देंगे, अभी उनकी भी पार्टी ड्यू है। क्योर फिर टोपी भाई, क्योर फिर टोपी। चलो सो लेट अस बिगिन गाइस। All right. We are starting with a quiz. So, in case someone still wants to join, they can just see the code on the bottom, and I'll share the link once again, just in case. So, we have the first question. ये एडिटर्स चॉइस क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, यहाँ अस मोमेंट होने वाला है। व्हाट इज द आंसर टू एवरीथिंग, जल्दी जल्दी बताओ। रीडिंग द डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग क्लीन कोड, यूजिंग स्टैक ओवरफ्लो, मेंटेनिंग डिजाइन पैटर्न। कल वाला अस मोमेंट, यस 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 यस। चलो अस मोमेंट करो। नाइस। 11 लोग कह रहे राइटिंग क्लीन कोड। ब्रो, why spend 5 minutes on writing clean code when you can spend 5 hours on copying it from overflow? All right, Priyansh Tyagi is on top. Priyansh Tyagi is also one of the seniors in IEEE. He is also a membership coordinator. You can contact him as well. So he's on top, Simsar and Papa on second and third. Let's move on to the next question. Which of the following is a programming language? सर आपके नाम का गलत उपयोग हो रहा है। HTML, CSS, JavaScript, none of these. चलो बताओ बताओ बताओ। ये चीज पे मैंने काफी फोकस करा था। I think those who heard it, they will be able to answer this correctly. अगर नहीं भी आता है, you can guess always because there's no negative marking. All right, 29 people have answered it correctly. The correct answer is JavaScript. JavaScript is a programming language. Basically, you can make logics using JavaScript, but you cannot do so using CSS or HTML. So उनको programming language नहीं कहते। कोई है जिसकी favorite programming language HTML है? Bruh, bruh. Okay, so Papa is on top, followed by Simsar, followed by Priyansh. जतिन पांडे सर की भी फेवरेट है भाई, देख लो। बड़े लोगों की चॉइस। Which of the following is not a valid way of styling your content? स्टाइल करने का इनमें से कौन सा वैलिड तरीका नहीं है, जल्दी गेस करो। We had a separate section about this कि स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। So the correct answer is using separate CSS tag in HTML. This is not a valid way. What were the 3 valid ways? कोई नाम जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। I'm waiting. Great.
So Simp sir is on top, followed by Nafia, followed by Dhruv Bakshi, DB, right? Which of the following is not related to backend? चलो ये तो जल्दी से कर दो, मतलब नाम सुने होंगे. टेल करो गाइस, टेल करो. CSS is the correct answer, one of the easiest questions of the quiz. So CSS is used on the front end for basically styling objects. काफी बात हुई. बाकी सबके बारे में एक वर्ड में मैंने बोला था कि बैक एंड में यूज होते हैं ये सब, कि जावास्क्रिप्ट होता है यूजिंग Node.js and Python and PHP are also popular languages supporting backend. So not much change in the scoreboard. Let's see who can win this game. So which HTML tag is used for line break? अगर तुम्हें एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुंचाना है अपने रेंडरिंग को, तो इनमें से कौन सा टैग यूज करते हैं, जल्दी बताओ. Thirty-six people have answered. All those who have not, please guess. You can guess always. All right, 28 people are correct. The correct answer is BR, which is used for line break. All right, so moving on. Again, not much change in the scoreboard. Sims are still on top. Sims are nice. What does S mean in HTTPS? This was not covered, but it's a general trivia question related to web technologies. कभी देखा है HTTP लिखा होता है, कभी लिखा होता है HTTPS. All right, secured is the correct answer. जिसको पूरी फुल फॉर्म पता है HTTP की, एक बार चैट बॉक्स में भी लिखो. चलो टेल करो गाइस. So secured is the correct answer. Select, stylize, special, ये सब incorrect है. Hypertext transfer protocol, great. Sims are still on top. Let's see if someone can beat him. Full form of HTML. भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आसान कहकर डाला ये. You guys have to do it like correct. सबका correct होना चाहिए. Great. यार वो सब छोड़ो, ये हाई ट्रैफिक मैनेजमेंट लैंग्वेज क्यों करा है, जिस एक इंसान ने भी करा है. Like, come on. So, eighth question of the evening. Front-end technology is also known as. You can always guess in case you don't know. So the correct answer is client-side technology, and the server-side technology is basically backend. So these are the two popular terms in web development. So moving forward. Okay, so a bit of change. Still Simsar is on top, followed by Nafia, followed by Papa. All right. So this question is for double points. We want a nav bar at the top of the window. What will be its positioning attribute? Chalo batao. We use this in the project as well. Guys, and if you can, then please take a screenshot or photograph of the Kahoot quiz and share it on your Instagram handles, IEEE, and tag IEEE DTU. All right. If you are participating in this, then you can share it on your social media handles. You can tag me or any of the mentors, and along with that, specifically tag IEEE DTU. All right. So not much change in the leaderboard. Sims are still on top. So the last question. Let's see if someone can remove Simsar from the throne. What does A mean in A tag?
ए टैग यूज किया था हम लोगों ने, याद होगा, व्हेन यू वांटेड टू रीडायरेक्ट द बटन टू सम अदर वेबसाइट, उस केस में यूज किया था. सो ए क्या है? All right, 9 people have answered it wrong, but 25 people have answered it correctly. So great. So the correct answer is anchor. Anchor tag कहते हैं. So let's see who is winning. So on third we have Papa. On second we have Nafia, and on first with 10,372 points we have Simsar. Simsar, let's go first. Nice. Congratulations, guys, for securing the winning position. I hope everybody enjoyed the game. And stay tuned with IEEE. Stay tuned with IEEE for the upcoming events. We'll be having SIGs on machine learning, Flutter development. Along with this, we'll be having other domains as well. इन्हें प्राइज कैसे मिलेंगे? अरे मिल जाएंगे यार, रुको जरा, सब्र करो, सबको कांटेक्ट करेंगे हम लोग. बहुत सारे प्राइजेस हैं, मतलब लॉक्ड इन है, उनको निकालना है हमें भी. हमारे लिए हो चुका, मतलब हम लोगों की उम्र जा चुकी है वो प्राइजेस लेने की. टेल करो गाइस, टेल कर दूंगा यार, क्रो नहीं होगा यहाँ पे. एक बार अपने पोडियम का फोटोग्राफ लेकर आप लोग शेयर कर देना हम लोगों से भी, एंड यू कैन इवन शेयर इट ऑन सोशल मीडिया. एंड स्टे ट्यून्ड, विल बी हैविंग फ्लटर एसआईजी टुमारो, एंड होप टू सी यू ऑल देयर. And other than this, we'll be having a lot of SIGs like on SolidWorks, on circuit designing. There are some hardware related SIGs on robotics as well, I guess. Other than that, we'll be having an SIG on machine learning as well. You'll be seeing Abhinav sir there. So वहाँ पे भी टेल क्रो मीनिंग, यार टेल क्रो बुरी बुरी जाइमोन गाय. What is the recruitment procedure? You can fill the Bitly form as of now. One of the membership coordinators will reach out to you. Rishi Raj has also shared the link. Jatin sir is already has also shared. All right, and attendance mark कर देना guys please. थोड़ा सा problem हो जाएगा otherwise in sharing the certificates. And we can choose only. नहीं, you can choose any department. मतलब you can choose as many departments as you want. It's open. You can take any TechWeek SIG as well, and even in the long term, you can participate in as many SIGs as you want. Like Abhinav sir will be conducting 3 of those. One of them is Flutter, then the other one is web development and machine learning. I'll be there in this SIG and probably in DSA as well. So we'll be in those SIGs as well. So no, you don't have to attend all SIGs to collect certificate. You will get the certificates for the SIGs that you attend, but you have to fill the form, guys. So I hope you enjoyed. Like, if you have any remarks or any feedback or whatever you felt about the session, you can write that down in chat box. और बाकी अगर किसी का मन है कुछ माइक ऑन करके भी बोलना चाहेगा तो he or she can say. बताओ. Thank you so much, guys. Stay tuned for the next session. We'll be having that on Flutter development. It will be a great technology to learn. Basically, Flutter can be used across platforms. You can make desktop apps. You can make iOS apps. You can make Android apps. Along with this, you can even make websites and web apps using Flutter. So stay tuned. So till then, toodles.